Good morning. A new chapter begins at the heart of India's Republic today in the grandeur of the Rashtrapati Bhavan. The country will witness the swearing-in of its 15th Vice President C.P. Radhakrishnan, a moment that is ceremonial and is also deeply political as the ruling NDA is asserting its strength and the opposition faces another reality check. We're going to get you live pictures, and these are the pictures you're seeing on your screens of the moment, because in just minutes from now, C.P. Radhakrishnan will be sworn in as the 15th Vice President of India after defeating INDIA bloc candidate and former Supreme Court Judge B. Sudarshan Reddy by a margin of 152 votes. Now, this is the latest pictures that we are getting to you, viewers, from the Rashtrapati Bhavan, where the ceremony is going to get underway. And the moment where C.P. Radhakrishnan will be sworn in as 15th Vice President of India. On your screens are live pictures, because in minutes from now, India is going to witness an important constitutional moment, which is the swearing-in of C.P. Radhakrishnan as the 15th Vice President of the Republic of India. Now, the Vice President's post is that of the second highest constitutional office in the country, and by virtue of this position, C.P. Radhakrishnan will assume the role of the chairman of the Rajya Sabha, presiding over the upper house of parliament. Let's cut across to the ceremony. या किसी कारण राष्ट्रपति पद खाली होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आज इस समारोह का साक्षी बनने देश के अलग अलग हिस्सों के नागरिक, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, जो बिहार से आते हैं। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप की अत्यंत सादगी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये वो हिस्सा है जहां पर सीपी राधाकृष्णन के परिवार के सदस्य बैठे हैं। इनके लिए ये यादगार अवसर गणतंत्र मंडप सफेद शीर्ष और सतह युक्त पीले जैसलमेर मार्बल से बने हुए स्तंभों से घिरा हुआ है, और दीवार के साथ लाल वेलवेट पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी आपने देखी, जो 5वीं सदी की प्रतिमा है, अपने आप में बेहद खास और हम सबको शांति का संदेश भी देती है। सीपी राधाकृष्णन क्रिकेट भी खेला करते थे, वॉलीबॉल का भी शौक था, और लंबी दूरी के धावक भी रहे जब कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो इससे इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बतौर झारखंड के राज्यपाल इन्होंने 4 महीने में सभी 24 जिलों का दौरा कर राज्य के नागरिकों और अधिकारियों से मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये उनके स्वभाव के दूसरे पहलू को भी दिखाता है कि कैसे वो जनता से जुड़े रहने के लिए नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं, और देश की जनता को भी उम्मीद होगी कि उपराष्ट्रपति। So the ceremony that is taking place today is taking place in presence of the President of India, Draupadi Murmu, who will administer the oath of office as mandated under Article 69 of the Constitution. The Prime Minister has arrived. They are at the Darbar Hall. Prime Minister Narendra Modi has just arrived. Members of the Union Council of Ministers are also present, governors, chief ministers, and leaders of the opposition, and also several dignitaries from across the country, especially in the world of politics and public life, are in attendance in the Darbar Hall today. Now, C.P. Radhakrishnan, born in Coimbatore in 1957, a senior leader of the Bharatiya Janata Party, he twice represented Coimbatore in the Lok Sabha and served as the governor of Jharkhand and Maharashtra, is known for his integrity, his accessibility and low-profile public style. His journey reflects decades of experience in both politics and in administration. So viewers, on the 9th of September, earlier this month, he was elected the Vice President in that contest against Sudarshan Reddy, the opposition's nominee. Now, C.P. Radhakrishnan secured 452 votes against
against 300 votes that were secured by Sudarshan Reddy, which had a clear margin of 152 that demonstrated the numerical strength of the ruling alliance. Joining us this morning as we get you live pictures of the oath-taking ceremony is with us senior journalist R. Rajagopalan. Also, Dr. Uday Nirutkar are with us as we keep these pictures live on our screens. Going across to R. Rajagopalan first. What does C.P. Radhakrishnan's elevation signify for the NDA politically and strategically? We're going to keep these pictures, but we'll also talk about the importance that this elevation has had. Especially in terms, on your screens also viewers pictures of Jagdeep Dhankar along with Venkaiah Naidu, both who held, key constitutional positions. But coming across to you, Mr. Rajagopalan, what do you think this signifies strategically and also politically for the NDA? Politically, it's a very, very important occasion that RSS ideologue has been installed as a Vice President of India, Chairman of Rajya Sabha. Politically, it is also important. This place, Rashtrapati Bhavan, has been open for from 2014. The Padma awardees, Padma Vibhushan and others, even a commoner can get into Rashtrapati Bhavan. Now, the elevation of Mr. C.P. Radhakrishnan also indicates that a commoner, the ordinary person from the cadre of BJP, RSS can be made as Vice President. That is the system of Mr. Narendra Modi's approach and also the Bharatiya Janata Party's approach. Now I say it's also very crucial for Mr. C.P. Radhakrishnan to conduct the House of Rajya Sabha, because the amount of, anarchism type of, hooliganism type of opposition parties, they cannot be controlled. High time Mr. Jagdeep Dhankar and Mr. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के 30वें दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I
I, Chandraviram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।